मानुषी संवाद में आप सब मित्रों का स्वागत है। वेलकम टू दिस एडिशन ऑफ मानुषी संवाद। टुडे वी गोइंग टू डिस्कस एन इशू जो कि सोशल मीडिया पे तो भारी भरकम इस पे डिबेट चल रही है तरह तरह की। एक तो कि ये जो भारतीय छात्र यूक्रेन से इवैक्यूएट किए जा रहे हैं, इनका कईयों का, सभी का नहीं, एक छोटा ग्रुप है जो बहुत ही अभद्र बातें कर रहा है, बहुत अभद्र व्यवहार कर रहा है। एक तो उस पर, और दूसरा जो ज्यादा चिंता का विषय है कि हमारे देश से हजारों छात्र हर साल यूक्रेन जैसे अन्य कई देशों में क्यों जा रहे हैं। वहां क्या वाकई ही उनको बेहतर शिक्षा मिल रही है भारत से, या शिक्षा ग्रहण के लिए जाते हैं कि डिग्रियां खरीदने। वैसे तो हिंदुस्तान में भी डिग्रियां बेची जाती हैं और खरीदी जाती हैं, और बहुत से डॉक्टर, इंजीनियर ये फर्जी डिग्रियों से ही बनते हैं। परंतु विदेशों में जाके भी, और विशेषकर उन देशों में जहां पे शिक्षा का स्तर ऐसा है ही नहीं कि इतनी किल्लत करके, इतने पैसे खर्च के वहां जाया जाए डिग्रियां वसूल करने, तो सवालिया निशान तो उठता है। और उसके साथ भाषा भी तो नहीं आती इन स्टूडेंट्स को। अब इंग्लैंड में जाए कोई, अमेरिका में जाए तो समझ आती है कि कम से कम यहाँ से थोड़ी बहुत अंग्रेजी गिटर पिटर करने की सीख के गए होंगे। पर यूक्रेन में जा रहे हैं या अन्य जो ऐसे ही मुल्क हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है, इन्हीं सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ दो विशेष मेहमान जुड़ रहे हैं। एक तो नागेश्वर जी, जो शिक्षा संबंधी मुद्दों पे बहुत ही पैशनेट इंटरेस्ट लेते हैं, उसमें बहुत रुचि है, और हमारा एजुकेशनल क्यूरिकुलम कैसा होना चाहिए, क्यों इतना बिगड़ा हुआ है, इस पे बहुत कुछ लिखते हैं, बोलते हैं। और साथ में संक्रांत सानू, जो विदेश में शिक्षा भी प्राप्त कर चुके हैं, यहाँ से आईआईटी के बाद देश में पहले आईआईटी कानपुर से पढ़े और फिर अमेरिका में भी जाके पढ़े। तो ग्लोबल क्या सीन है उसका अच्छा ज्ञान है संक्रांत को, और शिक्षा संबंधी विषयों पर इनकी भी तीव्र तीव्र प्रखर जानकारी भी है, समझ भी है। तो इन दोनों से हम ये चर्चा करेंगे कि ये जो ऐसे देशों में जा रहे हैं, क्या कारण है। What does it tell us about the failure of Indian education system, or the inadequacy of the Indian education system? So, welcome Sankrant ji, welcome Nageshwar ji. Let's get you started. Sankrant, I know you're not very well, so I'm going to ask you to start, so that just in case आपकी energy level deplete हो जाए, तो हम जब भी आप चाहें आप बंद कर सकते हैं बात करना. But I'm hoping you will stay till the end. But we'll let you go whenever you feel low. Ji. I'm at a place where my video and audio quality may not be the best also. So hopefully all the viewers will bear with this. तो आपने जो जो सवाल उठाया मधु जी, उसमें बहुत सारे पहलू हैं. बच्चों की शिक्षा कैसी हो रही है, बच्चों की अपब्रिंगिंग कैसी हो रही है, ये सब के सब पहलू इसमें आते हैं. लेकिन एक मैं आंकड़े से शुरू करूंगा. एक मैं थोड़ी सी रिसर्च कर रहा था, कह रहे हैं कि 2024 तक 80 बिलियन डॉलर्स हम फॉरेन एक्सचेंज का भारत की बाहर शिक्षा के लिए खर्च करेंगे. इसकी सबसे बड़ी विडंबना ये देखिए, अगर आप अमेरिका का उदाहरण ले लो, तो अमेरिका में जो इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं, अमेरिका में बहुत सारे जो एकेडमिक्स जो उनको पढ़ा रहे हैं वो भी इंडियन हैं. यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम इंडियन फैकल्टी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंडियन स्टूडेंट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और साथ पीछे पीछे फॉरेन एक्सचेंज भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं. तो क्वेश्चन इज व्हाट इज रॉन्ग विद दिस पिक्चर. व्हाट इज रॉन्ग विद दिस पिक्चर कि इंडियन स्टूडेंट इंडियन फैकल्टी में
किसी और को पैसे दे के वहां पे पढ़ता है, यहाँ पे क्यों नहीं पढ़ सकता? तो ये सवाल हमको इसको पकड़ना चाहिए, इसके बारे में विचार होना चाहिए, देश भर में विचार होना चाहिए, यहाँ पे भी होना चाहिए। तो ये एक मैं सवाल अपनी डिस्कशन के लिए खड़ा करूंगा। दूसरा जो सवाल आता है वो ये जो आपने कहा कि ये किस लिए यूक्रेन जा रहे हैं, भाषा की बात भी इसमें आती है, भाषा पे तो मैं बोलता ही रहा हूँ। ये सोचो कि यूक्रेन में पढ़ाई उनकी भाषा में होगी, रशिया में पढ़ाई उनकी भाषा में होगी, लेकिन हमारे देश में पढ़ाई मेडिकल की अभी तक अपनी भाषा में नहीं मिलती। तो इन बच्चों को हिंदी में पढ़ नहीं सकते, अपनी भाषा में पढ़ नहीं सकते, लेकिन वहाँ वो यूक्रेन की भाषा भी सीख कर वहाँ पर पढ़ाई कर लेंगे। तो वहाँ पे किस किस स्तर की शिक्षा मिल रही है, वहाँ पे क्यों जा रहे हैं, इसके बारे में हमको और चर्चा करने की आवश्यकता है। कि सबसे जो जो कम से कम मैंने पूछा बच्चों से, तो सबसे ये सवाल हुआ कि जी यहाँ पर एडमिशन नहीं मिलती या भारत की शिक्षा वहाँ से भी ज़्यादा महंगी है। यानी कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उसमें कैपिटेशन फीस इतनी ज़्यादा है कि उसमें एडमिशन देने के लिए जितने इनको पैसे देने हैं उससे कम में उनकी यूक्रेन का रहना सहना खर्चा, जाने का खर्चा और फीस का खर्चा उससे कम पड़ रहा है। तो दूसरा हमको सवाल इसके इसके बारे में विचार करना है। और जो तीसरा है वो ये है कि जो जैसे कुछ बच्चे हैं वो परेशान हो रहे हैं, गवर्नमेंट को गालियां दे रहे हैं, हमसे टॉयलेट क्यों साफ कराया, ये कराया। ये मुझे लग रहा है हमारी अपब्रिंगिंग की कमी है देश में। क्योंकि बच्चे को अपना ध्यान रखना, अपनी चारों तरफ की व्यवस्था को साफ रखना, अपना और वो एक कर्मठ तरह से काम करना, स्वयंसेवक की तरह काम करना, वो हमको हमारी आजकल परवरिश से भी निकलता जा रहा है। बच्चे ये स्पॉइल्ड ब्रैट्स की तरह हो गए हैं। वॉर जोन है, वॉर जोन में आपको कोई सुरक्षित स्थान मिल रहा है, यही कितनी बड़ी बात है कि आपको सुरक्षित स्थान मिल रहा है, कोई आपका ध्यान रख रहा है, कोई आपको मुफ्त की फ्लाइट भी सुना है मैंने, उससे आपको वापस लेकर आ रहा है। इतनी इतना बड़ा कार्य हो रहा है और बहुत सारे देश ये सक्षम भी नहीं है जो ये कर पाए हैं। और अपने देश को ये कहने की जगह कि ये कितनी बड़ी काम सरकार कर रही है, और मैं सरकार की आलोचना अक्सर करता रहता हूँ, जिस मुद्दे पे आलोचना, और नागेश्वर राव जो मेरे साथ है वो तो करते ही रहते हैं, मधु जी भी करती रहती हैं। हम सभी सरकार की आलोचना कर सकते हैं, तो सरकार की आलोचना होने या करने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये भी बात मानने की बात है कि जितना मोदी जी डिजास्टर रिलीफ में अच्छा काम करते हैं, जितना मोदी जी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस में अच्छा काम करते हैं, शायद ही कोई भारत की सरकार है जिसने ऐसा पहले किया हो। तो जहां वो ठीक कर रही है सरकार, उसमें उसको शाबाशी देना और कहना कि बहुत अच्छा काम किया, उसमें भी हमें संकोच नहीं करना चाहिए। आपकी बात सही है कि ये स्पॉइल्ड ब्रैट्स शायद होंगे, पर इतने स्पॉइल्ड ब्रैट्स होते देखिए यूक्रेन नहीं जाते, क्योंकि यूक्रेन में तो कोई इनको नैनी मिलने वाली नहीं, वहां तो इनको कोई कमरे साफ करने वाला नहीं। तो ये जो जिस स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, हमें टॉयलेट साफ करने को कहा, हो सकता है आप लोगों ने इतना गंदा किया हो कि वहां खड़ा रहना मुश्किल हो गया हो, तो इसलिए कहा गया हो कि अपने पीछे इतना गंद छोड़ के मत जाओ। ये दैट्स मोर लाइकली रादर देन किसी और के टॉयलेट थोड़े इनसे सफाई करवा देते। वो आपने अपने इस्तेमाल अपने किया, कह रहे हैं, अपने 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 कहने कह के रहे कर रहे हैं। आई नो, नहीं, बट ये स्पॉइल्ड ब्रैट की बात नहीं है। मैं 2-3 जिन सवालों पे आपने उठाया उनसे मुखातिब होने से पहले 2-3 आपको और भी वीडियो दिखाना चाहती हूँ। और एक ट्विटर भी है मलयालम के, कुछ मुझे किसी ने फॉरवर्ड किया है। आशीष जी जरा दिखाइए इनको, किस किस किस्म के कमेंट्स हैं, 1-2 ही दिखा दीजिए बस। आशीष, ये जो सबसे पहले आपने दिखाया था कि पाकिस्तान भी इससे अच्छा कर चुका है, पाकिस्तान ने सारे इवैक्यूएट, आप बताइए क्या हिमाकत है। आशीष वो दिखाइए जरा, पाकिस्तान के चहेते, हाँ ये देखिए, ये इनका जरा चौड़ा कीजिए इसको, आशीष इसको जरा बड़ा कीजिए,
हाँ जी, ये देखिए, this is how many students came from Bucharest to Uttar Pradesh in a military aircraft flying 7 hours without seat belts. Why does the government only post nice Air India evacuation pics in Northeast? अब बताइए क्या हिमाकत है इस शमा मोहम्मद की? कोई मिलिट्री प्लेन, विच मीन्स उसकी सिचुएशन की इमरजेंसी को देखते हुए अगर मोदी सरकार ने अपनी फौज को भी इसमें डिप्लॉय कर दिया है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि कोई साधन नहीं छोड़े, कोई साधन नहीं छोड़े। और ये क्या नहीं है, यानी इनको बिजनेस क्लास में लाना चाहिए था, साथ में शैंपेन और बिरयानी और 25 चैनल्स ऑफ एंटरटेनमेंट होनी चाहिए थी इन फ्लाइट, क्या क्या चाहिए था इनको। और ये भी कि वो अच्छी वाली पिक्चर्स क्यों सिर्फ पोस्ट की जा रही है, वो तो बहुत से स्टूडेंट्स भी कर रहे हैं, खुद भी कर रहे हैं। Nageshwar ji, what would you say to that before I bring another? RSS, BJP have been known to be extremely good in disaster management, particularly physical disasters, not the intellectual disasters. As we have seen in case of that Uttarakhand landslide in 2013, and then later on in many situations. In fact, RSS is known only for disaster relief, nothing else. So therefore, they have been doing wonderful job as far as the evacuation of the students from Ukraine is concerned. There is nothing. And then in situations, warlike situations, comfort is not the issue. Saving life is the issue. So it is not expected of Dr. Shama Muhammad to have tweeted that way. In fact, all available resources are pressed in to save life. So I think we should ignore that kind of. I don't know comment. whether I want to ignore such malicious comments. Because no, you see, the more you outrage, they get more traction. So it's better to avoid. वो भी जरा दूसरा भी चला दीजिए प्लीज। आशीष, वो जो वीडियो आपने अभी जिनके लिंक अच्छे हैं इतने रशिया के साथ, वो एक वेट कीजिए, वरना 10 से 15 हजार बच्चे हैं जो यहाँ पे इंडियंस शायद अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, जो इन फ्यूचर उनको सरकार गवा देगी, अपना देश गवा देगा। और शर्म की बात है, पाकिस्तान वालों ने इवैक्यूएशन कर लिया है अपने बच्चों का, अपनी इंडियन गवर्नमेंट नहीं इवैक्यूएशन कर पा रही है। कितनी शर्म की बात है हमारे लिए। पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तान देश जो अपने से कितने पीछे है, उन्होंने इवैक्यूएशन कर लिया है। पर जो इंडिया इतना डेवलप्ड देश, जिनके लिंक अच्छे हैं इतने रशिया के साथ, वो इवैक्यूएट नहीं करवा पा रहे हैं अपने बच्चों को। कितनी शर्मनाक बात है अपने लिए। प्लीज किसी भी करके कुछ भी कीजिए, इवैक्यूएट कीजिए। आप चाहे थोड़ी देर के लिए फायरिंग सीज फायर रुकवा दीजिए, 2 या 3 दिन के लिए, ताकि हम खुद, आप कुछ नहीं कर सकते, हम खुद कर लेंगे, पर कम से कम आप 2 या 3 दिन तक सीज फायर रुकवा दीजिए, ताकि हम बॉर्डर पर चले जाएं किसी भी तरह। नहीं, आप रशिया हमसे 30 किलोमीटर दूर है सिर्फ, आप रशिया से इवैक्यूएट करा सकते हो हमें। हमारे यहाँ से बेलग्रोद 7 किलोमीटर दूर है सिर्फ, जो सबसे नजदीक रशियन टाउन है, वहां से हम इंडिया के लिए फ्लाई कर सकते हैं। कुछ भी कीजिए प्लीज। अब ये तो सरासर झूठ भी लगता है कि नहीं संक्रांत? हाँ, ये तो क्योंकि पाकिस्तान के स्टूडेंट्स तो खुद ट्वीट कर रहे थे उल्टी बात कि देखो इंडिया के स्टूडेंट गवर्नमेंट कितनी प्रोएक्टिव है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने तो कुछ किया भी नहीं है। ये तो पाकिस्तानी उससे कर रहे थे। और मुझे लग रहा है कि ये इसके पास कोई जानकारी नहीं है। ये भड़काऊ बयान इसलिए दे रहा है कि उसको लग रहा है कि ये शायद वहीं पे ही है, तो लग रहा है कि भड़काऊ बयान देने से हो सकता है कुछ हो जाए। लेकिन इसको कौन सा जानकारी होगी वहां पे कि क्या हो रहा है और कैसे हुआ है और कितने इवैक्यूएट हुए हैं, कितने पाकिस्तानी हुए हैं, नहीं हुए हैं। एक छोटे से टाउन के ऊपर वो उसको थोड़ा बहुत पता हो सकता है, लेकिन बाकी सब जगह क्या हो रहा है उसको कुछ आइडिया भी नहीं होगा। Also, Pakistani students were using the Indian flag. No, more importantly, reportedly using. एक लास्ट दिखाती हूँ ट्वीट्स हैं, ये
केरला के स्टूडेंट्स के, जरा वो लाइए जस्ट क्विकली, और फिर शुरू करते हैं जो असली बात है हमारी। ऑफर दिया गया है, हम सब कम से कम 1000 बच्चे एक शेल्टर में, ऑफर दिया गया है जो बाथरूम साफ करेगा उसको पहले लेके जाएगा। सीरियसली हम इतना स्ट्रगल करके और बाथरूम साफ करेंगे। एक ट्वीट्स भेजे थे विच आर रियली वेरी डिस्टर्बिंग, जल्दी से। ये किसने कहा था आपसे वहाँ? इंडियन एम्बेसी ने? अच्छा, ये कहा कि टॉयलेट साफ करिए फिर जाएंगे। जो पहले उन्होंने उनको प्रायोरिटाइज करेंगे। किसी की ऐसी हालत नहीं थी, कोई नहीं उठा। जब उन्होंने बोला कि जो पहले वॉश करेगा उसको पहले लेके जाएंगे, तब सब चलेंगे, क्योंकि बच्चे जाना चाहते थे वहाँ से, निकलना चाहते। तो आपने वहाँ किसी अधिकारी को, मंत्री इतने सारे गए, किसी को नहीं कहा? वहाँ पे हम इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि हमें निकलना था। कहाँ आए जी, हेलो, दिस वाज ओनली टू से ये शिक्षा वाकई ग्रहण करने किसी भी तरह की, इतना देश को बदनाम करने का कोई बहाना चाहिए। और एक ट्वीट्स मैंने देखे, वेरी क्विकली आई रीड। केरला के मुस्लिम से जब पूछा गया आप कौन है, आप इंडिया के हैं, तो बोले नहीं, मैं इंडिया का नहीं हूं, मैं केरला का मुसलमान हूं। दूसरा, रेस्क्यू ऑपरेशंस, जो ऑपरेशन गंगा कहा गया, he says the rescue, मलयालम में लिखा, the rescue operations must have been planned using river Ganga bloody fecal sperms. और सेकंड कमेंट बाय हनीफ कदम पोर्ट, वो उसको कहता है ऑपरेशन गोमूत्रा। थर्ड कमेंट मुजीब जी कहते हैं, होप दे डोंट डू घर वापसी ऑफ द नेम्स, जो उनके पास आ गए हैं मुसलमान स्टूडेंट्स के, उनकी कहीं। और दूसरा, व्हाई डोंट दे कॉल इट ऑपरेशन गोमूत्रा, गो माता वगैरह वगैरह। अब बताइए, ये भी कहने की इस तरह की बदतमीजी बातें, हैरत होती है at such a point when the government is performing at its best. Anyway, so coming back to the main question, Nageswara ji, what would you say to the opening comments Sankrant made? I'll give a brief background, some statistics I have collected about the Indian students abroad. As Sankrant has already mentioned that by 2024, the amount of foreign exchange, amount of Indian money or capital that is required to finance education of Indian students abroad will be around 80 billion, which is more than 60,000 crores per annum. Now, as on today, as per the data that's available because of the COVID, the India sends highest number of students abroad for study. Earlier, it used to be China pre-COVID. Now, during the COVID, a lot of Chinese students have come back. So now, India stands the number one. It sends highest number of students at 11,33,000 approximately. That means these are the number of students. This is a cumulative figure, not an annual figure. Because when a student goes abroad, he goes for 3 or 4, 5 years for education, depending on the course. And Indian. Please bring Mr. Rao on the screen. Please bring him on the screen as he's speaking. Yeah, sorry. Yeah. So, and these students are in 99, spread over 99 countries. And in 35 countries, there are 1,000 or more than 1,000 Indian students studying, taking up various courses. And the highest number of students you find not in US, not in Canada, but in United Arab Emirates, which stands at 219,000 as on today. This is followed by Canada, which is 215,720, and thereafter it is the US, which is the 211,930. And now I have categorized these countries and also the population of Indian students in these categories into 5 categories. Number one is now English-speaking countries. That includes the traditional English-speaking plus the Philippines, Hong Kong, Singapore, etc.
And there are 640,000 students studying in various courses in the English speaking countries, which works out to be around 56 or 57% of the total Indian students abroad. Then, as I have already mentioned, USA, Canada, UK, Australia, and New Zealand, these are the countries which are predominantly populated by Indian students in the English speaking world. Then the second category is Islamic countries. In Islamic countries, the UAE has already said no, it's the highest number of Indian students are there, and in Saudi Arabia, then Oman, Bangladesh, Iran, Egypt, Kuwait, Turkey, Yemen, etc. There are about 360,000 students in these Islamic countries, which works out to be around 31-32% of the total Indian students abroad. Now, interestingly, UAE one can understand because as I'm given to understand that large number of foreign universities are establishing their out of the country campuses and giving education. So a lot of students, Indian students, are attracted. But whereas the Saudi Arabia has 88,800 students, this I'm unable to explain because Saudi Arabia, as we know, at least to my knowledge, does not have much of a secular education or a technical or medical or the modern education. But who are they? Are they undergoing religious education or something else? So this is that has to be looked into. The data information has to be got. Similarly, Oman. Oman is also not known to be a great center like UAE for modern education. Still, it has 46,000 Indian students there. The religious categories of these students is also not available, but then this has to be looked into. And it also requires a lot of attention why these so many number of students are going there, because Saudi Arabia is known to be the center for Wahhabi kind of Islam and all that. Whether it will have any security implications for the country as well as for the region. Then you have the third category or the grouping which I have done is the erstwhile Soviet republics or erstwhile USSR, which includes you have Russia, Ukraine, then Georgia, Kyrgyzstan, Armenia, all these countries. There are about 80,000 plus students, Indian students studying in these countries, which works out to be roughly around 7% of the Indian students studying abroad. Now, out of this, Ukraine has the maximum number of students, Indian students, that is 18,000, followed by Russia, which is at 16,500. Then Kyrgyzstan, interestingly, it has 10,000, and also Georgia 14,000. Then Kazakhstan has 5,300. Now, this is also, as Sankrant has said, this is not even an English-speaking area. What are they studying and what are the learning? What is the medium of learning, medium of instruction? These are the things which I will discuss. Then the fourth category is the non-English speaking Europe, that is other than Ireland and England. There are around 62,000 students in these non-English speaking European countries. Germany accounts for the largest number, that is 30,000 plus, followed by France, which is about 10,000. These two take major this. And then lastly, other countries, that is none of them. There are around 53,000 students in all other countries. And China has the maximum number in that other category. That's around 29,600. And then Japan has around 1,600. And then Korea has around 1,500 students. So this is the major breakup of the students and their categories. Out of this, as I have already mentioned, two are the countries where the group of countries which should raise our concern. One is the Islamic group of countries other than UAE, why they are going. The second one is erstwhile Soviet republics, where they don't speak English, nor our people know any of the
the Russian or Russian language, because Russian is still the predominant language in that area. And so I have a personal example from from somebody whom I know. So this is, as Sankrant has mentioned, that the Indian private education, especially the medical education, these countries are popular for medical education. The cost of medical education in these countries is comparatively less, around 50% of the cost in Indian private medical colleges. So, personal example which I know is that I know a person whose daughter is studying in Kyrgyzstan. There is an agency which takes around 35 to 40 lakhs. They get admission in that country. The faculty is sent from here. They teach there in English or broken English or whatever. And then somehow there are no facilities, nothing, which as I understood from the girl. All that they are required to stay is, some hostel is provided and some kind of a place, some tutorial kind of thing is provided. And then because they are under the Medical Council of India requirement, minimum 5 years the medical student has to reside abroad for so that then only the degree can be considered as a foreign medical degree. So then they come back here, and during the summer inter-semester holidays, then they are given coaching, like a normal quota type coaching. Then after the course is over, again for the foreign medical graduate, there is a foreign medical graduate examination conducted by the MCI, which is a screening test to accept the degree conferred by the foreign country. For that, another 6 months special coaching is arranged through the doctors and others here. In other words, all that they know is theoretical knowledge. And these degrees, once they get pass the FGME, then they get MBBS, and they somehow manage here to do the house surgency. So this is what is happening, a very third-rate kind of medical education. And then these doctors will treat all of us, and that is the reason why these Ukraine, Kyrgyzstan, Russia, and all these countries are popular for the medical students. So this is something which is extremely worrisome. I think I have a feeling that probably there could be some kind of a clique or some kind of a racket must be operating even in this area also. However, one good thing which I must appreciate this government is, since 2014, they have increased the number of medical colleges. Almost, it has almost doubled now. I think earlier in 2014 it was 404 medical colleges with 54,000 and odd MBBS seats. Now it has increased to 5,096 medical colleges with 88,000 seats. And as per the policy which I am given to understand, every district in the country will have at least one medical college. And that's a very good thing that the government is doing as far as medical education is concerned. So it is appreciable. And as I have already mentioned, as the title of your program indicate, these are only degree buying education, particularly in these non-English speaking areas where they are going. It's only buying the degree, and they pay half the amount, get the degree, somehow manage it through, and learn on the job, whatever medical profession or medical knowledge or experience that they want to gain. Thank you. This is so worrisome for so many reasons, apart from the fact that such ill-trained doctors are going to wreck our health system. जहाँ भी हैं वो सिर्फ शॉप्स, मेडिकल शॉप्स चलाएंगे, कोई क्योरिंग या हेल्थ केयर का तो कोई सिस्टम इसको माना ही नहीं जा सकता. पर ऐसी ही टीचिंग शॉप्स हमारे
देश में भी है, डिग्रियां बिकती हैं और डिग्रियां खरीदी जाती हैं, इंजीनियरिंग की भी और मेडिकल की भी, वगैरह वगैरह। दो और बातें मेरे दिमाग में आई एंड आई वुड लाइक बोथ ऑफ यू टू कमेंट ऑन इट। एक तो नागेश्वर जी, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू फॉर गिविंग अस द ब्रेकअप। कितने मिडिल ईस्ट में जा रहे हैं, कितने इस्लामिक कंट्रीज में जा रहे हैं, उसकी सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस क्या, जहाँ कोई सिर पैर नहीं है सेक्युलर एजुकेशन का, तो जाहिर है कि वो किसी और ही नियत से वहां जा रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि सरकार कोई इसका लेखा जोखा रख रही है, कोई इसका रिव्यू कर रही है, कोई इसकी ट्रैकिंग कर रही है, क्योंकि जो सरकार यहाँ पे स्पेशल स्कॉलरशिप देती है मुस्लिम स्टूडेंट्स को पीएम फंड से, उनका भी कोई ट्रैक नहीं है कि वो वहां स्लीपर सेल सेटअप कर रहे हैं हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज में कि पढ़ाई करने गए। तो मुझे नहीं लगता कि वो सऊदी अरेबिया में या ओमान में जा रहे हैं तो उनका ट्रैकिंग कर रही होंगी, उनका सिक्योरिटी चेकअप हो रहा होगा, ऐसा कोई अंदेशा तो है नहीं। दूसरी जो बात मेरे दिमाग में आई, एंड प्लीज कमेंट ऑन दैट बोथ ऑफ यू, जब भी कोई अमेरिकन या फ्रेंच या जर्मन या ब्रिटिश या जापानी व्यक्ति बाहर पढ़ने जाते हैं, मान लीजिए कोई जापान का व्यक्ति जर्मनी में जाता है या कोई अमेरिकन इंडिया आके कुछ करते हैं, तो वो इंडिया स्पेशलिस्ट बनने के लिए, वो जर्मन स्पेशलिस्ट बनने के लिए, वो उस देश को समझने के लिए और अपने देश में वो ज्ञान ले जाके, सो दैट योर फॉरेन पॉलिसी, योर इकोनॉमिक पॉलिसी, योर ट्रेड पॉलिसी, वी हैव नॉट प्रोड्यूस। अब ये जो 20,000 के करीब यूक्रेन से आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई एक भी होगा जो वहां पे यूक्रेन को स्टडी करने गया होगा। इस देश के लिए दो भी इनमें से यूक्रेन स्पेशलिस्ट मिलेंगे हमें। जैसे आप देख लीजिए, कोई रशिया का भी नहीं मिलता। वो रशियन प्रोपेगेंडा कम्युनिस्ट पार्टी के केडर भले ही कितना भी चलाते हो, बट दे डिडंट गो टू, in fact communists used to go to study mostly in western countries, mostly in US and England. I haven't seen many communists sending their children or even themselves going there. Now, isn't that quite peculiar that there is no knowledge gathering from other countries? The government doesn't even encourage it. I would say अगर जा ही रहे हैं तो कम से कम इनके लिए ऐसी स्कॉलरशिप करो, यूक्रेन को स्टडी करके आओ, आप कजाकिस्तान को स्टडी करके आओ, आप चाइना स्पेशलिस्ट बन के आओ। ऐसा तो कोई दिख ही नहीं रहा होराइजन में। व्हाट डू यू से टू दैट? नहीं, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट इशू है मधु जी। आई रिमेम्बर, मैंने शायद एक कहानी सुनाई दी थी। एक बारी मैं अमेरिका में था तो किसी ने मेरे से पूछा कि आप क्यों आए हैं अमेरिका, what brought you to America? And I said I came here for the anthropology of the natives. And मेरे मन में भी ये था, मैंने कहा कि अमेरिका के अपने एक्सपर्ट्स भेजता रहता है इंडिया को स्टडी करने के लिए, हमने अपने एक्सपर्ट्स क्यों नहीं भेजे उनको स्टडी करने के लिए? तो मैं बहुत वर्षों से उनकी सोसाइटी को स्टडी करने के काम में लगा रहा और लगा हूँ। लेकिन सवाल ये है कि ये सिस्टमैटिक तरह से क्यों नहीं हो रहा? ये जब, जैसे आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया, यूक्रेन जा रहे हैं, रशिया जा रहे हैं, चीन, जहाँ पे भी जा रहे हैं, हम भारत के रिप्रेजेंटेटिव होके जा रहे हैं कि हम वहाँ पे स्टडी करें, या हमारी एक होड़ सी लगी हुई है, एक सर्वाइवल मेंटालिटी कहोगे या आप उसको एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कहोगे, एक इस तरह की मानसिकता आ गई है कि बस किसी तरह से कुछ जुगाड़ लग जाए, कुछ जॉब बन जाए, कुछ जुगाड़ लग जाए। और वो ये जो हमने मानसिक स्थिति बना रखी है, इसमें ये आर्थिक सवाल भी है और एक मानसिक सवाल भी है, दोनों सवाल इसमें आते हैं कि हमने इस तरह की अपनी स्थिति बच्चों की क्यों बना दी है। और उसका एक बहुत बड़ा कारण मैं
अंग्रेजी शिक्षा को भी बोलूँगा। अंग्रेजी शिक्षा के कारण बच्चे जो हैं वो कट जाते हैं अपनी भारतीयता से, और उनका हमेशा आंकड़ा यही रहता है कि कोई उनको पाश्चात्य का कोई स्केल है उसके ऊपर अपने आप को नापते हैं, और उसमें अपनी भूमि नहीं है कि अगर आपने दूसरे को स्टडी करना है तो अपनी जमीन चाहिए ना, आप कहाँ खड़े हो तभी आप दूसरे को देख पाओगे अगर आपका कोई अपना अस्तित्व है। लेकिन अगर आपका कोई अस्तित्व ही नहीं है, आपका अस्तित्व भी बाहर से आ रहा है, उनकी डिग्री से आ रहा है, उनके सर्टिफिकेट से आ रहा है, उन्होंने जो आपके बारे में बोल दिया उससे आ रहा है, तो आप में वो एक खुद गर्जी नहीं है कि आप दूसरे को स्टडी कर पाओगे। तो ये बहुत आवश्यक है। और दूसरा जो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है, एक मैं और मजेदार स्टडी देख रहा था, अमेरिका में भी और चीन में भी लगभग 90% लोग गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं, जबकि भारत में आधे आधे समझ लो संक्रांत चले गए बहुत बुरा हाल है। जी। तो आपकी व्यूअर्स, इसलिए भी हम देर से शुरू करें क्योंकि संक्रांत जी के आज वहां पे वाईफाई बहुत कमजोर चल रहा है और उनका लैपटॉप भी नहीं चल पा रहा था, और इसलिए संक्रांत जी को अपना फोन इस्तेमाल करना पड़ रहा है। वो भी जगता है बुझता है। प्लीज कंटिन्यू संक्रांत। हाँ, मोबाइल डेटा के ऊपर हूँ फोन पे, तो प्लीज प्लीज फॉरगिव मी। तो इसमें क्या है कि अगर आपकी जैसे मैं कह रहा हूँ ना, एक तो आपको अपना अस्तित्व है, और दूसरा हमने क्या किया है कि जो पब्लिक एजुकेशन है, हमने पब्लिक एजुकेशन को थर्ड क्लास बना रखा है, स्पेशली फ्रॉम अप टू द स्कूलिंग लेवल, है ना। 12वीं तक की जो शिक्षा है, जिसके पास भी थोड़ी से पैसे हैं, जो भी अफ्लुएंट है, वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजेगा। क्यों? क्योंकि सरकारी जो स्कूल है उसकी हमने हालत ऐसी कर दी है कि उसमें जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहते हो वो आपको नहीं मिलेगी। उसके बाद आपने दूसरा क्या किया है, गांधी जी का बहुत मजेदार कोट है जो धर्मपाल जी ने द ब्यूटीफुल ट्री में कहा। उन्होंने कहा कि जब अंग्रेज आए तो उन्होंने शिक्षा को बर्बाद कर दिया। किस तरह से शिक्षा को बर्बाद कर दिया कि उन्होंने अपने ढर्रे में स्कूल शुरू कर दिए, और जो अपने ढर्रे में स्कूल शुरू कर दिए उसके अंदर उन्होंने फर्नीचर के ऊपर और ऐसी चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया, पैराफर्नेलिया पे ज्यादा ध्यान दिया, जबकि हमारे यहाँ तो पेड़ के नीचे भी बहुत अच्छी शिक्षा मिल सकती थी। तो शिक्षा को ऊपर रखने की जगह आपने शिक्षा को महंगा कर दिया। जैसे ही हम अंग्रेजी में जाते हैं शिक्षा महंगी हो जाती है। जैसे ही हम आरटीई जैसे कानून लाते हैं जो कहती है कि जब तक आपके पास फेंस नहीं है तब तक आपका स्कूल नहीं खिलेगा। अब एक गांव के अंदर फेंस का रिवाज ही नहीं है, फेंस कौन करता है, ओपन रहता है। तो आपने ये इतने कमरे होने चाहिए, ये फेंस होना चाहिए, और पूरी आरटीई में, जिसकी मैंने आलोचना की थी, शायद उन्होंने कुछ बदलाव किया उसके बाद, पूरी आरटीई में उन्होंने एजुकेशनल स्टैंडर्ड की एक बारी भी जिक्र नहीं किया। राइट टू एजुकेशन बोल दिया, कितने कमरे होने चाहिए, फेंस होना चाहिए, बाथरूम होना चाहिए, ये आपका क्राइटेरिया है स्कूल का। शिक्षा होनी चाहिए, ये क्राइटेरिया हटा लिया गया। उन्होंने बल्कि ये कहा कि आप किसी स्टूडेंट को फेल नहीं कर सकते, जितने भी नंबर आए, कम भी नंबर आए, उनको फेल नहीं कर सकते आप। तो आपने कहा कि स्तर शिक्षा का बिल्कुल गिरा दिया आपने, और जो जो नॉन शिक्षा रिलेटेड चीजें हैं उनको आपने ऊपर कर दिया, और ऊपर से ये भी कह दिया कि ये सिर्फ हिंदुओं के ऊपर अप्लाई होगा आरटीए, और किसी के ऊपर नहीं अप्लाई होगा। तो ये बहुत सारी आपने समस्याएं प्राइमरी लेवल के ऊपर खड़ी की। हायर लेवल के ऊपर आपने क्या किया है कि हायर लेवल के ऊपर काफी बच्चे जो बाहर कुछ जा भी रहे हैं, वो ऐसे भी हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन जो आपने जिस तरह से रिजर्वेशन का इम्प्लीमेंटेशन किया है, स्पेशली मंडल के बाद, जो अगर आप SC ST को ले लो, उसमें वाकई कुछ लोग थे जिनको आपको आवश्यकता थी ऊपर उठाने की, लेकिन जो बाकी ये कैटेगरी बनाई गई उसके कारण आपने क्या किया कि बहुत सारे जो होनहार बच्चे भी हैं वो पढ़ नहीं पाते और ना ही पढ़ पाते हैं। और ऊपर से हमने क्या किया कि IITs में और सब प्रोफेशंस के अंदर हमने वही वाली रिजर्वेशन कर दिए। चाइना का कंपैरिजन लो, चाइना ने 1000 टैलेंट्स प्रोग्राम शुरू किया। 1000 टैलेंट्स प्रोग्राम में
उन्होंने कहा कि हम दुनिया का सबसे अच्छा साइंटिफिक टैलेंट अपनी यूनिवर्सिटीज में रिक्रूट करेंगे, उनको हम करोड़ों रुपए देंगे बोनस की तरह और उनको रिसर्च के लिए, ताकि वो टॉप लेवल, पूरी दुनिया की टॉप लेवल रिसर्च और साइंस चाइना में ला पाए। और हमारी ये हालत है कि मैंने खुद सुना है कि कोई अमेरिका से बहुत अच्छे संस्थान से पीएचडी करके आता है, उसको भारत में जॉब भी नहीं मिलता टीचिंग के अंदर, क्योंकि कोटे के अंदर उसका नंबर नहीं लगता है। तो ये सब हमने समस्याएं, हमने सोचा ही नहीं कि शिक्षा की नीति जो है उसका उद्देश्य क्या है। क्या हम चाहते हैं कि हमारा टैलेंट बढ़े, या हम चाहते हैं कि टैलेंट को हम उसमें एक खड्डे में डालें। तो वो हमारी नीति ही नहीं है कि जो कहती है कि जहां भी टैलेंट है, चाहे गांव में टैलेंट है, उसको उभारे कैसे, आगे कैसे लाए, अपनी भाषा में कैसे पढ़ाएं, उसको आत्मसम्मान कैसे दे, आत्मगौरव कैसे हो, आगे कैसे बढ़े। वो हमारी शिक्षा की सोच नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा कि रिजर्वेशन सिस्टम ने तो बिल्कुल कहर ढा दिया। संक्रांत, एक बात पे थोड़ा सा हमारा छोटा सा मतभेद है। आप ये जो आपका पॉइंट है कि SC ST के लिए करने की जरूरत थी और अच्छा किया उसलिए, मैं कहूंगी कि SC ST को वर्ल्ड क्लास से भी बेहतर शिक्षा देने की जरूरत थी, कोटा की जरूरत थी। आपके स्कूल जो गांव के हैं, वहां एक ब्राह्मण बच्चा या SC बच्चा, दोनों का बेड़ा गर्क हो रहा है। किसी भी कास्ट का बच्चा, वहां शिक्षा का स्तर इतना खराब है तो कोई किसी का एडवांटेज नहीं है। तो रिजर्वेशन मुझे लगता है अपने आप में जवाब है ही नहीं, यदि आपका शिक्षा स्तर इतना घटिया है कि आप मुश्किल से वो 10% मार्क्स ला रहे हैं, पर वो कोटा फिल करना है इसलिए उनको मिल रहा है, मतलब जो मिनिमम पास मार्क्स से भी कम मार्क्स लेके वो भर्ती हो रहे हैं, फिर वो मैनेज नहीं कर पा रहे, वो IIT में भी जा रहे हैं, स्कूल में भी टीचर के रूप में भी भर्ती हो रहे हैं, जिन्होंने खुद कभी पढ़ाई नहीं की उनको आप टीचर बना रहे हैं क्योंकि आपको कोटा फिल करना। सो आई डोंट थिंक SC ST के लिए भी, I would say give them gold plated education, give them the best that there is in the world. एक भी कोटा नहीं होना चाहिए किसी के लिए। आप प्रायोरिटी दीजिए जो निग्लेक्टेड रीजन्स हैं, उसमें जो भी बच्चे हैं, गांव और शहर का एक तो फर्क, फिर अमीर और गरीब का जो फर्क है, इसमें आप जो लो इनकम ग्रुप्स हैं जिनकी खुद अच्छी शिक्षा के लिए वो पैसा देके नहीं करने की क्षमता रखते, मैं कह रही हूँ गोल्ड प्लेटेड एजुकेशन सबके लिए दीजिए ना, किसी के लिए रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं है। और अगर ये होता तो 10 साल में, 11 साल में सभी एट पार आते बच्चे, सभी एट पार होते, उसमें गांव का ब्राह्मण भी, गांव का खत्री भी, और गांव का जिसको आप SC FSC कहते हैं, आई मीन एक्चुअली दीज आर नॉट आवर टर्म्स, और मुझे लगता है कि हम लोगों को उनकी जाति से बुलाएं और तब हमें असली पिक्चर होगी। SC ST कहने से, जिनको आज SC ST कहते हैं, वो तो रूलिंग डायनेस्टीज थे बहुत से इनमें से। बिल्कुल एक मैं सिर्फ छोटी सी बात कहना चाह रहा हूँ। पहली बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये जो स्केड्यूल कास्ट ये नाम है, स्केड्यूल का क्या मतलब, एक लिस्ट है। लिस्ट किसने बनाई? अंग्रेजों ने बनाई। एक स्केड्यूल बनाया उन्होंने, जिनको तबाह किया उनकी लिस्ट बनाई। ये अंग्रेजी शासन के सारे विक्टिम थे, बिल्कुल उनकी लिस्ट बना दी। एनीवे, द मेन पॉइंट वी आर कमिंग टू इज कि एक तो रिजर्वेशन ने स्कैर्सिटी और रिजर्वेशन, इतनी स्कैर्सिटी की जरूरत क्या है? इतनी स्कैर्सिटी की जरूरत क्या है, ये मुझे नहीं समझ आती। और रिजर्वेशन भी स्कैर्सिटी वाले माइंड से आती है मधु जी। अगर इफ देयर इज एनफ फॉर एवरीबॉडी, we wouldn't need any quota. If any child who wants to study and be a doctor, ठीक है, can be a doctor, we would not need any quotas. The quotas are because you've created scarcity, and then everybody is trying to fight for a small slice of this pie. Rather than expanding the pie, you're expanding the slices of a small pie, right? So your focus should be, how do we expand the pie so that everybody rises, everybody can benefit? And how do we get the best teachers to teach them so that everybody can benefit and everybody can rise? Rather than that, हमने क्या किया है कि
जो अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी वही हमने इम्प्लीमेंट कर दी। एक छोटी रोटी के टुकड़ों के ऊपर सब छीना झपटी कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि सबके पास कैसे रोटी पहुंचे। नहीं, it's not just छीना झपटी, it's also सामाजिक द्वेष, बिल्कुल जो बिल्कुल किसी समय में नागेश्वर जी तथाकथित अपकास्ट में एक भावना थी कि उनको अपने समाज का उत्थान करना है, तो जो पीछे रह गए हैं किसी भी वजह से, हालांकि पूरा ही हिंदुस्तान समाज डेविस्टेटेड था, बर्बाद होके रहा जब अंग्रेज यहाँ से गए, फिर भी जो बिल्कुल डिसएडवांटेज थे उनके प्रति कम से कम संवेदनशीलता थी। आज आपने दुश्मन बना दिया है, क्योंकि अगर आपका होनहार बच्चा जिसके 98% नंबर आए, 99% नंबर आए, उसने दिन रात मेहनत करके अपना करियर बनाने की सोच के मेहनत करके अच्छे नंबर लाए, अच्छे से अच्छे स्कूल में आप गए, आपके पेरेंट्स ने इतनी पूंजी लगा दी आपको अच्छी शिक्षा देने के लिए, उसके बावजूद आपको एडमिशन नहीं मिलती किसी ढंग के कॉलेज में। तो इसलिए मैं देख रही हूँ बहुत से बच्चे, इंक्लूडिंग मेरे सोशल सर्कल में, फैमिली सर्कल में, ये एक बड़ा कारण है कि 1-1 करोड़ रुपया माँ बाप को देना पड़ रहा है फॉरेन यूनिवर्सिटीज में एक बीए, एमए, बीकॉम, एमए इस तरह की डिग्रीज के लिए। ये बहुत ही बड़ा अन्याय चल रहा है और इसकी तरफ किसी का ध्यान शायद गया है। जैसा आपने कहा कि बहुत से मेडिकल कॉलेज खुले हैं, मेडिकल कॉलेज खुले हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट नागेश्वर जी, बट काश एक फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट में अगर आप बढ़िया वर्ल्ड क्लास आयुर्वेद सेंटर्स खोलते तो हमारा हेल्थ प्रोफाइल कहीं बेहतर होता। वही है कि लैंग्वेज के साथ जुड़ जाता है, हमारी ट्रेडिशनल ज्ञान परंपरा के साथ जुड़ जाता है। जैसे हमारे आईआईटीज में हमारी ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग की जो ज्ञान परंपरा है उसके लिए कोई जगह नहीं है, इसी किस्म से हमारी मेडिकल एजुकेशन में ट्रेडिशनल ज्ञान परंपरा की कोई जगह नहीं है, बल्कि आयुर्वेद को आपने नीचे रख दिया। और मेडिकल कॉलेज आप देख रहे हैं, दे आर नॉट एबल टू एक्चुअली, दे डोंट हैव एनी सोल्यूशन टू हेल्थ प्रॉब्लम्स एक्सेप्ट symptomatic management of disease. Symptomatic management, they don't cure anything. So to my mind, the same amount of money, if it had gone into Ayurveda and preventive health care, we would not need so many hospitals and not so many medical colleges जिसकी एकदम पागल हवस की तरह उसके लिए देखिए क्या क्या कॉस्ट पे करके बच्चे जा रहे हैं वहां से नकली डिग्री भी लेने के लिए। That to my mind is a bigger tragedy than And this is anything another else. area, Nageshwar ji, आप बोलना चाहें तो आप बोले, लेकिन I just wanted to mention कि this is another area where we can learn from China. When I was in China, I was very surprised to know that most of their leading hospitals actually use Chinese medicine. So जो लोग भी हैं वो यही मान के चलते हैं, और उन्होंने क्या किया, चाइनीज मेडिसिन के साथ ही अब सर्जरी बाकी सब चीजें जोड़ दी, वेस्टर्न मेडिसिन को उन्होंने असिमुलेट कर लिया चाइनीज मेडिसिन के अंदर। तो जो आम नागरिक है वो चाहे उसको वेस्टर्न मेडिसिन भी कुछ दे जा रही हो, लेकिन द हॉस्पिटल इज अ चाइनीज मेडिसिन हॉस्पिटल, तो उसके मानसिकता में यही है कि चाइनीज मेडिसिन ही मुझे ठीक कर रही है, और सारा का सारा जो ढांचा है वो चाइनीज मेडिसिन के हिसाब से चल रहा है। हमारे यहाँ तो ब्रिटिश ने आयुर्वेद में सर्जरी आउटलॉ कर दी, जबकि सर्जरी आयुर्वेद में बहुत डेवलप्ड थी, उन्होंने आउटलॉ कर दी। और अभी तक सब इंडिपेंडेंस जिसको कहते रहते हैं लोग, मेरे को तो पता नहीं लगता कहाँ से इंडिपेंडेंस है, अभी तक इंडिपेंडेंस में वो रिस्टोर नहीं हुए राइट्स ताकि वो सर्जरी कर पाए। और यहाँ तक ही नहीं, अंग्रेजियत को डालने का एक वो कारण ये देते हैं कि अरे सब नॉलेज अंग्रेजी में, जो कि झूठ है, ये देते हैं, लेकिन आयुर्वेद जिसमें सारा का सारा ज्ञान संस्कृत में है वो भी केवल अंग्रेजी में पढ़ाया जा रहा है आज। ये तो आपने हालत देश की हुई है। बिल्कुल और सही जो सारे जो ट्रेडिशनल वैद्य थे, उनकी फैमिलीज थी, उनके बच्चे छोड़ रहे हैं आयुर्वेद
क्योंकि वो आपने इतने बाधा बना दिए कि जो सारा का सारा उनकी लिनियज थी वो भी आपने डिस्ट्रॉय कर दी। सरकारी हॉस्पिटल, जो सरकारी मेडिकल कॉलेज जो केवल अंग्रेजी में चलेगा, आयुर्वेदिक कॉलेज, उससे जब तक आपकी सर्टिफिकेशन नहीं होगी आप आयुर्वेद भी नहीं अपने आप को कहला सकते, चाहे आपके पुश्तों से आप प्रैक्टिस कर रहे हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कह रहे थे कुछ नागेश्वर जी? Earlier the Chinese was a favorite destination for this medical education abroad. Now it has come down because of the same insistence of the China government that Chinese medicine should be taught, should have the predominant part of the curriculum. And that's what the girl who has gone to Kyrgyzstan and who was studying, she told me that why she went there. She said no, she was initially thinking of going to China, but because of this that insistence on Chinese medicine. So I'm just reinforcing what Sankrant has said. But I would like to little go beyond the current discussion in the sense that the so many number of Indian students who are wanting to go abroad or who are going abroad for study is actually a symptom of the larger malaise in the education system. That unless we address that, that is a disease. This is only symptom. Why the students, so many students are going is one of the symptoms of the malaise in our education system. I would like to give you a brief few details about the engineering or technical education. How in the last 15-20 years technical education has really taken off in India and it has again fallen flat. For instance, this is the data from the All India Council of Technical Education. Technical education here includes engineering, technology, then management, planning, town planning, architecture, pharmacy, and such other courses. In the year 2020 and 21, there were 9,650 institutes offering these courses combinedly, and the intake capacity of these all these colleges put together, as approved by the AICTE, was 30 lakhs 87,000 and odd, whereas only 16 lakhs 61,000 were enrolled. That means the capacity that was created, only half of it could be filled up. Out of these 16 lakhs 60,000, 61,000, only 6 lakhs 52,000 got placement. In other words, 10 lakh technical students with technical degrees were found unemployable. True. That is the level of the type of our technical education. So the engineering, that is why a large number of engineering colleges, private engineering colleges are getting closed because they are not able to give even a normal level of quality of education, forget about high quality education, and they do not give any skills. In fact, there was an interesting case where I think a video was in circulation some time ago. The mother of a electrical engineer student, she asked him to repair the ceiling fan, and this fellow said, "I don't know." Then she got so enraged that no, she tore the degree certificate, saying that you are a useless fellow. That in fact sums up the kind of skill sets or the quality of education that we Indian system is imparting to our children. They are absolutely unemployable. They have no skill sets. They cannot stand on their own legs. All that they have to unlearn whatever has been taught and relearn for them to become employable. And secondly, as regards the reservation that was talked about, there was an interesting case from Andhra Pradesh, undivided Andhra Pradesh. The matter went up to Supreme Court. And in the scheduled areas, the more enthusiastic bureaucrats and mostly bureaucrats, the left-leaning bureaucrats, they had passed a law or a government regulation that in the scheduled areas only the tribals will be appointed to any post, whether it is a peon or whether it is a teacher or whether it is certain level non-gazetted posts.
So people challenged it. Then matter went up to Supreme Court. Supreme Court limited it to 50%, saying that up to 50% only you can fill up with the tribal students of all the non-gazetted posts. But the question is, I come from an area where my adjoining area is a tribal area. All the teachers are the tribals. Unfortunately, these tribal students who became teachers, they never got education, but they got a degree certificate, BED or whatever, the teacher training certificate or whatever. Then they became teachers and they know nothing to teach. In fact, it is the greatest damage, or it's the greatest injustice that is being done to the tribal students by employing those teachers who do not know anything. When he does not know anything, what will he teach? This is the kind of education that we are imparting in the name of social justice. We are not giving them quality education. In fact, we are we are imparting mass level social injustice to everybody, Yes. particularly educational injustice. It is not social justice, it is social injustice in the name of justice. The second one is, we have converted all our campuses, particularly the government universities and government colleges, as centers for political propaganda, extension of your social theories, anthropology theories, political activism, and student activism. From there, the leaders come up. So hardly any kind of education is allowed to be taught. Then the other one is, when you have reservation in the teaching profession, and when undeserving people become the teachers include lecturers, professors, and everyone, and when someone challenges him, what is he teaching, he will immediately start uh, throwing casteist mud about the other. Maybe sometimes they may use even SC/ST Prevention of Atrocity Act. If not, if he is not an SC/ST, if he belongs to something else or OBC or like that, then he will immediately start spreading the casteist, saying that because look, I am so and so caste, or a Pidit, Vanchit, and all those kind of things which our BJP uses. So therefore, these upper caste fellows are trying to harass me. So this is the, because casteism becomes a cover to for his incompetency and lack of knowledge, lack of intellectualism, and lack of teaching abilities. So in this environment, what do the teachers do? They don't do anything. They only become a kind of the, what do you say, sardars for mobilizing the casual labor, like that. Similarly, they become the leaders of these students tukde gang. So instead of imparting life skills, or vocational skills, or money making skills, or such other thing, we are making them completely useless. So this is a second problem. The third one is the cylindrical type of education. Now it has come into everyone's brain or mind that if a student joins class 1, he must at least end up as a graduate, if not a postgraduate or a PhD. So there is a cylindrical, as Sankrant has said, RT says you should not stop a student from being promoted to the next class, whether he studies or whether he passes or whether he acquires the skills to study the next class. So he has to be pushed up. So in the process, it's a cylindrical level. Anyone who joining at the bottom, he has to reach the top. There is no pyramid. What is the point in having so many degrees which are useless? What for are you going to what are you going to do with that? And this gets reflected in another thing. The minimum educational qualification required for a sub inspector and for an IPS is graduation, for a clerk and for an IAS officer is a graduation, for a TT, that is traveling ticket examiner of the railway train, is a graduation, and also the
IRTS, that is Indian Railway Traffic Service, which is recruited through the civil service, is also graduation. So it means the degree has no value. We are simply pushing up people and conferring degree, and the same malaise gets reflected when people are unable to get that degree certificate here. They go abroad, they go to Ukraine, they go to Kyrgyzstan, all those countries who are so poor, who do not have anything. They offer these kind of degrees. So unless we take care of the disease that has infested our education system, there is no point in talking about other things. Yeah, But Nageshwar ji has made migration of the students abroad or $80 billion going abroad and all that can never be stopped. Thank you. संक्रांत, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं कह रहा था, बहुत सही कह रहे हैं नागेश्वर जी. He's raised very fundamental issues that I think we need to reflect on. I'll give you some examples from my own experience hiring people. हम garudabooks.com चलाते हैं, गरुड़ा प्रकाशन पब्लिशिंग हाउस, और मैंने टेक्नोलॉजी का करियर छोड़ के इसमें इन्वेस्ट किया बिकॉज वी नीड गुड मटेरियल, गुड स्कॉलरशिप, गुड बुक्स आउट देयर. तो उसमें लेकिन हमको रिक्रूटमेंट जब हम करते हैं तो हमारे पास यही समस्या है जो नागेश्वर जी कह रहे हैं कि लोगों के पास डिग्री है लेकिन आता कुछ नहीं है, कुछ नहीं आता उनको. ना वो अंग्रेजी का एक शब्द, एक सेंटेंस बिना गलती के लिख सकते हैं, ना वो हिंदी का या अपनी मातृभाषा का लिख सकते हैं. किसी भी भाषा में वो एक वाक्य ढंग से नहीं लिख पाते. वाक्य छोड़ दो, एक लड़की से मेरी बात हो रही थी, उसको मैं प्रोग्रामिंग पोजीशन के लिए हायर कर रहा था, BCA है वो. उसने पूरी की पूरी BCA डिग्री में कंप्यूटर को ऑन नहीं किया अपने कॉलेज में, क्योंकि जरूरत नहीं है. वो कह रहे, मैंने कहा तुम पेपर कैसे पास करते थे? कह जी पेपर हमारे रिटर्न होते थे, कंप्यूटर साइंस का रिटर्न एग्जाम हो रहा है लेकिन कंप्यूटर उनको चलाना नहीं आता है, उनको कोई प्रोग्राम उन्होंने कभी चलाया नहीं, कभी लिखा नहीं, उनको हम कंप्यूटर डिग्री दे रहे हैं. ये हमारी शिक्षा की हालत है. और वही है ना जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर who could not repair the ceiling fan and mother tore off the अरे नॉट ओनली जी सीलिंग फैन, और वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भी नहीं कुछ जानता. यानी कि थ्योरेटिकल नॉलेज भी नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी नहीं है, कुछ है ही नहीं इस शिक्षा में. तो हम क्या कर रहे हैं? डिग्री का अर्जित कर रहे हैं. अगर डिग्री अर्जित करनी है तो बिहार से खरीद लो, नहीं तो यूक्रेन में जाके खरीद लो, कहीं से भी ले लो. जो आपने विषय उठाया मधु जी शुरू में कि आप डिग्री खरीदने जा रहे हो या पढ़ाई करने जा रहे हो, पढ़ाई करने की आवश्यकता ही नहीं है किसी को, क्योंकि अगर आपने सरकारी नौकर बनना है तो जैसे नागेश्वर जी ने कहा सरकारी नौकर बनना है तो आपको तो ये एक डिग्री का सर्टिफिकेट चाहिए क्वालिफाई करने के लिए. चाहे आपको टिकट कलेक्टर बनना हो, चाहे कुछ बनना हो, उस डिग्री से आपको लेना देना कुछ भी ना हो, चाहे आपके काम से लेना देना ना हो, उस डिग्री का कोई मतलब ना हो, लेकिन आपने एक ग्रेजुएट होने की रिक्वायरमेंट रख दी है. अगर आपकी रिक्वायरमेंट यही है कि ग्रेजुएट की डिग्री हो तो खरीद लो फिर, क्योंकि सीखना तो रिक्वायरमेंट है ही नहीं. कहीं आपकी नॉलेज इज नॉट ए रिक्वायरमेंट एनीवेयर. संक्रांत, इसका एक वेल मीनिंग कैसे कैरिकेचर इस बात से बन जाता है. मुझे याद है जब मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने बहुत फख्र से डंके की चोट पे वो कहते थे कि मैंने टीचर्स की भर्ती में करप्शन हटा दी, क्योंकि केवल मार्क्स के ऊपर भर्ती होगी. आप अप्लाई करो ऑनलाइन, आपके मार्क्स देखे जाएंगे एंड नो इंटरव्यू, नो सिलेक्शन प्रोसेस, नो चेकिंग आउट whether you actually have basic elementary teaching skills. Now, at one level, it was a very noble thing to do कि आप मेरिट को ला रहे हैं, पर अगर मेरिट की हालत ये बैंड बजा हुआ मेरिट का कि नंबर ले लो, डिग्री ले लो, पर कुछ ज्ञान नहीं मिलता आपको, तो फिर ये कहाँ का मेरिट रहा. एक तो वो. दूसरा, आप देखिए JNU जो हमारे देश की सबसे एलीट यूनिवर्सिटी मानी जाती है, मारामारी होती है वहां एडमिशन के लिए. आप मानेंगे कि PhD स्टूडेंट्स के लिए रिमीडियल इंग्लिश की क्लासेस चलाई जाती है, क्योंकि उन बच्चों को उतनी भी नहीं अंग्रेजी आती जो क्लास में लेक्चर है. बहुत से आ रहे हैं
रूरल एरिया से या छोटे शहरों से या तथाकथित पिछड़ी जातियों से, उनकी हालत ये है कि रिमीडियल इंग्लिश, और वो जाहिर है कि अब पीएचडी के लिए कोई आया है, एमफिल करने के लिए कोई आया है, तो वो रिमीडियल इंग्लिश की क्लास में बैठ के तो अपमानित ही महसूस करेगा ना, इंटरेस्ट नहीं, सो दे डोंट अटेंड, बिकॉज दे डोंट अपनी अटेंड दे भाषा में डोंट क्यों नहीं कर गेट। सकते? हाँ, अपनी भाषा में क्यों नहीं कर सकते पीएचडी? यही मैं तो आईआईटी दूसरा, कानपुर में था, है ना? दूसरा मैं आपको आईआईटी मालूम। कानपुर में ये टॉक दे रहा था, अंग्रेजी माध्यम का ब्रह्मजाल, एक लड़की आई, उसके बल्कि मैं, आप अगर यूट्यूब पे जाओगे आपको मिल भी जाएगा इसका बयान। वो लड़की आईएएस में उत्तीर्ण हो गई थी और उसके बाद वो पीएचडी करने आईआईटी कानपुर में आई थी। होशियार लड़की है, लेकिन हिंदी माध्यम से है, और उसको वो कह रहे हैं कि तुम्हारे को अनुमति नहीं है, तुमको अंग्रेजी में काम करना पड़ेगा। तो उसने कहा कि मेरी तो स्पीड इतनी तेज है हिंदी में पढ़ने की, मेरी अंग्रेजी में 10, उसमें उसकी एक 10 अंश भी नहीं रह जाते उस स्पीड का जितना मैं हिंदी में पढ़ सकती हूँ। लेकिन उसको मारा जा रहा है, उसको कहा जा रहा है कि तुम्हारा हुनर नहीं है, तुम समझ नहीं रहे हो, तुम निकम्मी हो, तुमको मेहनत नहीं करनी आती। उसने कहा मैंने पूरी जिंदगी सिर्फ पढ़ाई की है, सिर्फ मेहनत ही करनी आती है मुझे, लेकिन मेरे को अंग्रेजी से क्यों मार रहे हो? तो रेमेडियल इंग्लिश की जरूरत तो तभी है ना, हम कह रहे हैं आपको पीएचडी के लिए केवल अंग्रेजी में ही आप पीएचडी ले सकते हो। आप बिल्कुल। जब जापान में जापानी में ले सकते हो, कोरिया में कोरियन में ले सकते हो, फ्रांस में फ्रेंच में ले सकते हो, भारत में अपनी भाषा में क्यों नहीं ले सकते पीएचडी? No, no, listen. Madhuji, one point you are saying about the corruption in recruitment. It is most of the states have gone by this kind of thing. As a result, we get the most useless students because we are not seeing. We are only seeing the seeing elimination of corruption at the point of recruitment. But what about the corruption when acquiring the degrees? Once they know that if degree marks in the degree will ensure you a job, then all kinds of corruption would take place in acquiring those degrees and also in acquiring the required number of marks there. That nobody is attending to that. Because that is much worse corruption. No, and so many surveys have been done which show that teachers recruited for teaching secondary school, ninth class, 10th class, 11th class, fail a class 5 exam. Yes, When they yes, administered a class 5 exam, they fail. Now, yes. what are you going to do with such teachers? No, And no, they yet, are not going to do anything. They will only spread darkness. They will not spread any light. yeah, now what I would like to bring you to, Nageswarji, another very important point you raised. And as somebody who's witnessed the disastrous impact of unionism, student unionism, teacher unionism, our universities and colleges have indeed become recruiting ground for political foot soldiers of various parties. And I honestly, as somebody who fought the Miranda House election, Delhi University Student Union, this, that, and the other, I saw how venal the role of political parties, all cutting across the entire political spectrum, is in lumpenizing students, in making them into robotic slogan mongers, have no sense of, facts, ability to deal with information, analysis, nothing. So each party then fills them with robotic slogans, which is what they hurl at each other and at society at large. And therefore, no issue can be discussed. Even it's not just in our TV debates that we have those bow, 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 bow kind of debates. But even in universities and colleges, it's become so difficult to have a decent discussion among students on any issue which is issue based, which is to do with. So I really think that if we want to revive or rescue education system, we have to ban unions from all levels. Teachers unions in schools not allowed. Colleges, student unions, and teachers unions not allowed. I mean, in private universities, all these elite universities, they don't allow any union bazi. I see no reason why DU or JNU or any of the other universities should be held hostage by political parties through control of student unions, teachers unions.
What do you say to that? There are two things we have to see in this. One is, no, there is a symbiotic relationship between the teaching community and the school. The symbiotic relationship is like this. At the up to the school level, these are the teachers who man all the polling booths and polling process. Oh, yes. So And any politician who dares to touch them or even annoy them or displease it's them, finished. they would ensure all kinds of things to see to it that that party loses. True. This is the up the school level. So you cannot touch them. No political party. Secondly, they also use the other symbiotic relationship mean the other political parties, both ruling and this one, they also placate them so that no, they support them. Suppose if they are with them, they would ensure the success, political success or electoral success somewhat. So this is the symbiotic relation. You annoy me, I'll finish you. You be with me, then I will help you. This is the True. kind of. This is at the school level. At the college level, they are part of the, most of them are part of the deep state, Yeah. which are encouraged by the American universities and American academia. If you look at the American academia, particularly post USSR dismemberment of the USSR, that is, let's say pre-80s, the default position of the American academia was conservative. Post 80s, after the dismemberment of the USSR, all kinds of leftists have migrated to US. They have occupied the US academia and media. Now the default position is left liberalism or Islamo-leftism. This is the complete change in the, and the same deep state operates in India in the colleges and university level. Now, recently, I don't know whether you have seen this news item last year, and this Emmanuel Macron, the president of the French president, he ordered an inquiry about the destabilizing and delegitimizing and other effects of the American disruptive theories developed in the American academia, how it is adversely impacting the French society and French nation. Well, I don't who is this? Who is this? Emmanuel. Nageswara? Emmanuel Macron. You just Okay. Google it, you will get it. Emmanuel Macron. He ordered it, and there was a lot of opposition to him, but he said nothing doing. We have to, this Islamo leftism is the one which is being imported from the American universities. It has to be somehow stopped. Now, unless we do, problem is in India we do not even recognize the existence of a problem. When you do not recognize the existence of a problem, how do you find solutions? We think that this our education system is good, and when we teach, in fact, one of the reasons why people don't take interest in studying Ukraine or in the country where they are undergoing studying about the about that particular country is because in India we have taught them to self-loathe our own country, to self-loathe India, to self-loathe Hinduism, to self-loathe Indian civilization, to self-loathe everything that is India. Now, what interest does he have? The moment he goes there, he finds enamored of that country. He would not. He gets dazzled by those countries. He would never like to study. The exceptions being Sankrant, who has been studying the U.S. society. Or Rajiv Malhotra, who's done the same. Exactly. In fact, no, they There have are a few like that. they have much worse things. Our society is heaven if you compare to them. If you stop this kind of vilifying, you'll I'll find. give you a summary. I'll give you a summary of this, Nageshwar ji, of my research. Is Please. Indian state is the problem. Indian society is far ahead of the West. Okay? Exactly. So in the West, the state is strong and useful, whereas the society is Useful. falling apart, right? But the funny thing is that the Indian state thinks it's its job to fix Indian society, whereas the Yes. state is the problem. Yes. Society needs to fix the Indian state, not Indian state the Indian society. हमने वो जो
मैरिज एज वाली डिस्कशन में भी मधु जी इसकी बात की थी कि Indian state is स्टेट that ने अपने आप को कॉलोनियल मास्टर बना के वो पूरा समाज को ठीक करने में लगा हुआ है, जबकि स्टेट इज द मोस्ट problem. It's the corrupt, it's venal, it's dysfunctional, it doesn't work, it doesn't do any of its jobs. सोसाइटी तो हमारी अभी भी चल रही है, अभी भी कोई संबंध है जिससे वहां पे तो बच्चा अबैंडन हो जाता है, कोई पूछने वाला नहीं होता। The state यहाँ is पे अभी भी functional. कोई पूछने वाला होता है कि भाई कैसा हो रहा है, क्या हाल हो रहा है तेरा। Sankrant ji, the problem is it is not the dysfunctional state. It is the anti-Hinduness of the state, and in its anti-Hinduness, it is extremely efficient. Maybe in other things it is inefficient. But when it comes to anti-civilizational, anti-Hindu or anti-nativity, anti-Indian languages, anything that is of Indian, anti-Ayurveda, anti our all other things, it is extremely efficient because it is the deep state. In fact, it is the deep state within the Indian state that is responsible for all this. Whereas and it's a continuation of the colonial state also. Exactly. The colonial state was never dismantled. In fact, it's much worse. If you see the number of people who were the percentage of people who were speaking in English in 1947 and the percentage of people who are speaking English now in India, percentage, not real numbers, Yes. because the population has grown, it is much high now. In fact, much higher. English has come into our kitchen, English has come into our drawing room, English has come into our bedroom, in everything. Yes. Even when two Hindi people, they speak English, when two Telugu people, they speak English. In fact, they feel ashamed to speak in their own languages. This is a level. And who has done it? Indian state has done it. And it is Indian state, which is the outer shell of the deep state. They have done it. आपकी बिल्कुल बात सही है, और इसलिए मैं एक सवाल है, एक व्यूअर ने पोस्ट किया हुआ है, नैग्स, जरा ले आइए एडमिन जी। What is the volume of bad debts in educational loans? This is another thing that we've taken from the American system, whereas you encourage students to take loans for education, and then soon as you finished, you are loaded with that debt, so that you don't have any peace of mind even at that early age, to explore yourself, what you're good at. You have to take on the best paying job at the fastest possible speed in order to clear those loans. Have you any idea about these bad debts in educational loans, either of you? Yeah, we have to go to the Malays, in the sense, if you go to what is our system, Indian system or Hindu system, Vidya and Vaidya should never be charged. Yeah. Both Vidya, a guru should never charge, because he should not see the financial condition of his student. He has to teach free of cost. And after the education, if the student feels, then he would give the Guru Dakshina in whatever form that is. And most of the time, the Guru Dakshina was again in the learning something that the student has to learn. That is and similarly, Vaidya, that is the medical healer. Medical treatment. It is completely free. Healer, call them healers. Yes, no Vaidya. If it is said, at least as I know in our this one, if a Vaidya charges any money, he will lose his knowledge. Yes. This was the kind of thought that absolutely. Now we have completely commercialized, like education, like you go to hospital and they keep on, whether required or not, they will prescribe some 5, 6, 10 tests. Even if you have done the X-ray yesterday in some other hospital and go to a new hospital, they will insist that you must take X-ray. Likewise, it is a commercialization of education. In fact, educational loans must be completely banned. And medical insurance should be completely banned. These are the two things which the state must ensure free of cost for every citizen in this country. The only problem, hello. Now, I think, and this is the last question I would like us to deal with. I personally am convinced that the Sarkari Karan of education, the state takeover of education and homogenizing it,
has been the bane and destruction of the education system in India. And let me explain why I say that. So long as people, youngsters were learning from their own caste, your jati biradri system of imparting knowledge from their own fathers. If you are a master weaver's son, you learn from him. You're a farmer's son, you learn from him. Not that you can't branch out. You could. If you wanted to become a trader instead of a farmer, you could do that. But when your own family was responsible for importing skills which they themselves had honed over centuries, it's not for nothing that India produced some of the finest products, industrial products in the world, because those skills that were imparted were honed over centuries, generation after generation. So no father would stinge on teaching his daughter or son the best that he has to offer. But these, firstly, the course curriculum being standard, I think is a great injustice. You're mass producing robotic brains. There is no creativity possible, no creativity left in the system. All you have to do is to mug up and reproduce the design curriculum books. And I really think the Sarkari No, I agree. No, I agree. When I any said great scholars post when I said free 1947. education, when I said free education, it does not mean sarkadikaran, or it is the homogenization or the uniform. It's not homogenization, it is uniformization of the education. These are, I never meant that. All that I said is that the state should finance, should give required grants and finance for imparting free education. If a suppose if I want to start a college or school and impart education, the state should take care of that. But by ensuring certain standards of the peer pressure, or that means peer groups, as it used to have in the earlier centuries before the English came into before advent बिल्कुल of बिल्कुल English. I I think meant both that. of you, State has no standards. Localization. Second, आप localization of the दोनों syllabus. आप दोनों का पॉइंट करना Without state अपना सोचा जा स्टैंडर्ड सकता है नहीं मधु सेट जी। कर पा रही। अगर हम हाँ, अपने पुराने सिस्टम को देखें तो जो आप कह रहे हो और जो नागेश्वर जी कह रहे हैं दोनों बातें सत्य हैं उसमें, क्योंकि जो हमारा पुराना सिस्टम था that was thoroughly decentralized in education and thoroughly also saying कि जो विद्या और वैद्य है वो उसके ऊपर शुल्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो जो लोकल टेम्पल था या जो लोकल कम्युनिटी थी वो टेम्पल को सपोर्ट करती थी, टेम्पल के साथ बिल्कुल स्कूल अटैच्ड होते थे और वो उसमें आपको निःशुल्क शिक्षा मिलती थी और जो जो बिल्कुल शिक्षक था उसका सम्मान होता था और ये डिसेंट्रलाइज था. इट वाज नॉट बिल्कुल रन from a central authority, from the king बिल्कुल who's setting the curriculum that is going to be taught everywhere and any uniformity. It was not like that at all. It was बिल्कुल within the scholarly community that thing happened. And same thing in medicine also, जो नागेश्वर जी कह रहे थे बहुत ही important है. We should हर just मंदिर के साथ recognize. वैद्य होता था। जी जी बिल्कुल बिल्कुल. एंड मेडिसिन में भी क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू आया है कोविड के टाइम भी सब इसकी बात कर रहे हैं. Capitalism does not work in medicine. We should be very, very clear about it, या because the basic the needs are different. For a capitalist, the sicker the society, the more money they are going to make. बिल्कुल The more money the medical profession and the pharmaceutical industry will make, the sicker the society, right? Yes. Healthy society where they will go bankrupt. So there is a fundamental conflict of interest right now when you commercialize medicine to the extent that it has been commercialized, and the failure is seen in America. America spends the most per capita on medicine, and it has some of the sickest people on the planet. The most Yes. obese, the most among the so-called developed world, some of the lowest age range. So age expectancy, life expectancy. So capitalism in a medical system does not work. And also education, if you look at the successful models of education, whether you look at Europe, whether you look at what Russia has done or China has done,
they have been state supported but not homogeneous necessarily. I mean, homogenization तो depend करता है society के ऊपर, हो भी सकती है, लेकिन state supported है successful model सब जगह जो है. पर संक्रांत देखिए, ये जो हमारे मंदिरों पर हमले हुए पहले जी. इस्लामी आक्रांताओं द्वारा, क्योंकि वो ज्ञान केंद्र थे, और जी. जो आप कह रहे हैं नागेश्वर जी, निशुल्क होता था और कोई चार्ज करना ये पाप समझा जाता था, Yes. चाहे बिल्कुल. वैद्य है या सन्यासी, क्योंकि वो मंदिर में बेस्ड था, तो धर्म का काम माना जाता था. शिक्षा देना एक धार्मिक जिम्मेदारी मानी जाती थी समाज की, पूरे समाज की, और इसीलिए पूरा गांव या पूरा समाज, अगर वो किसी कम्युनिटी के टेम्पल्स हैं, वो पूरा समाज सपोर्ट करता था, क्योंकि उसकी अहमियत वो समझते थे, और इसलिए जरूरत अनुसार स्किल्स और हाई क्वालिटी स्किल्स दिए जाते थे, समाज का नियंत्रण. और उसमें फिर जाहिर है कि जो एजुकेशन है वो लोकलाइज्ड है, लोकल नीड्स के अनुसार है. आज के दिन आपने मंदिर तो छीन लिए, वहां से पैसे उजाड़ लिए, आपने वहां से छीन लिए, डकैती मार मार के सरकार ने. तो जो शिक्षा का अगर हमने पुनरुत्थान करना है, तो कहीं जो हमारे पारंपरिक तरीके थे, हमारे मंदिरों को ज्ञान केंद्र फिर से बनना पड़ेगा. अगर वो केवल मूर्ति के सामने जाके दर्शन देने का केवल काम है, चढ़ावा देने का काम है, तो उनकी कोई बहुत रेलेवेंस रहेगी नहीं, रह नहीं सकती, अगर वो सरकार के कंट्रोल से निकल भी जाए. अगर मंदिरों की रेलेवेंस बननी है, तो ये दो काम तो बहुत जरूरी है. हर मंदिर, कम से कम जो बड़े वाले हैं और छोटे वाले भी, टू द एक्सटेंट दे कैन, और कुछ नहीं, संगत बिठा के कुछ तो धर्म का ज्ञान हो, वो भी नहीं हमारे अब छोटे छोटे मंदिर भी करते. सो हम गुरुकुल सिस्टम की तो बात करते हैं, पर गुरुकुल परंपरा Madhu ji, we have मंदिर और धर्म स्थानों से जुड़ी होना भी शायद जरूरी होगा. जी. Madhu ji, we have to be very clear on one aspect. You cannot replicate whatever existing in the past, because no time has moved. But what is required is you cannot recreate the past. What is required is what were the best things in that system, Yeah. and what are there any good things in the present system, and let's have a hybrid one, so that no we will be benefited from the best of the both. That requires first and foremost your amendment to articles 25 to 30. Now, when Hindus do not have equal educational rights, where is the question of we talking of all this? When the article 28 bans teaching of Indian education or Indian civilizational knowledge in the name of, by classifying it as a religious education, how do you teach? So therefore, we must start with the problem. Wherever the problem is the constitution, that is, as far as education is concerned, it is article 28, 29, 30. Unless these are suitably amended to give freedom to every religion, no religion should be stopped. Everyone should be able to teach their dharma grantha, their knowledge. Nobody should stop it. But why deny that to Hindu society, Hinduism? So this is one. The second one, and more, the second important is, if you have to stop homogenization or the uniformization of education, you must bring back mother tongue education up to PhD level, as Sankrant has been saying. The moment, let's say in Orissa, if the entire system of education, the medium of education is Oriya, naturally the focus will be Orissa only. Focus will be that area. Similarly, in Telugu, this नहीं, area. ये नहीं मैं मानूंगी. I'll tell you why. No, 1 second. Let me be very clear. No, please don't interrupt me. There is a difference between localization of knowledge and regionalism in politics. We have to distinguish it. Even for thousands of years, people learned in their mother tongue, yet we had that civilizational
or a cultural nation concept in our minds that India is one country, Kasi belongs to us, even if the person is from Rameshwaram, or if someone is from Dwarka, he knows that Puri Mandir jana hai on the east coast. So all these things was there. We have to ensure, no, what we are talking, because in this limited time it's not possible to discuss all those details, but broadly we must agree that the education system has to be liberated from the Indian state, and that should start from amending articles 28, and then thereafter gradually. It's not going to happen, it may take few generations for it to happen, but a beginning has to be made that way, that first articles 28, 29, 30 have to be amended to give equal educational rights to Hindus, that to teach their religion or their religious knowledge in formal education. Number two, our mother tongues should be the medium of instruction, with Sanskrit or in even Hindi, absolute no problem, or any language, or even Tamil, let any language, let any Indian language be a kind of a link language. It automatically develops, because before advent of English, did we not have any link language? Those who wanted to go to Kasi, how are they going? People from Telugu speaking area, or Tamil speaking area, or Kannada speaking area, or how are they going? They developed, they had their own system of communications, which we do not know. So these are the two things we must insist upon if we have to detox Indian education. I use the word detox because it's the toxins that is getting into our mind. We need to detox. We need to have antidotes so that no, we become, our education gets cleansed and detoxified. We are absolutely on the same page, Nageshwarji. It's not that I was at all differing with you when I said, yes, all languages, mother tongue has to be the basic language for education, with translations across languages in order for us to enrich each other. But I have written you a, know, I have a written an small open letter. start, a small start could be made by letting, for example, all those religious denominations, like for example, the Ramakrishna Mission, the Arya Samaj, the Tirupati, they all have set up big educational trusts, and they have their whole chain of educational institutions, but they have to teach the same crap. They're Yeah, not allowed to have their own syllabus. Though Arya Samaj, for example, since I've worked on this as part of my academic this thing, and it was true for many others, it was supposed to be Anglo-Vedic education. Nothing is left of that. Nothing is left of that, because Sarkari Karan ensured that DAV College and St. Stephen's College have the same curriculum, have to mug up the same books, and answer this, from the same kind of question paper. At least allow those who have the capacity to devise their own curriculum, if they've set up these chain of colleges, to start with, give them freedom to do that. If Ashoka University has the freedom to set up its own curriculum, I see no reason why Ramakrishna Mission or Tirupati set up schools and colleges, or Arya Samaj cannot have that. Last year I had written an open letter to Honorable Prime Minister saying that if Europe, which has around 32 languages, if Eurozone can have all 32 languages as their official languages, we also can have all our languages in Schedule 7 of the Constitution as the official language of the languages of the Union of India. It should start with there. Then what happens? Any knowledge that comes anywhere in the world, it has to be translated within 6 months into all Indian languages, and from one Indian languages to all Indian languages, with Parliament having the instant machine translation system, with Supreme Court and High Courts having the same system. So that what happens today, sitting in Hyderabad, if I send a query in Telugu to central government, I should get reply in Telugu. Now I do not know, for instance, I do not know English. Yet I have to file my income tax return only in English. What nonsense is this? I am paying money to the government and yet I have to write in English. Can I not submit in my Telugu language income tax return?
Or can I not submit my pleadings before Telangana High Court in Telugu? But it does not accept it. But does it not bother you? For example, even Ayurvedic medicines come in Sanskrit, English. yes, exactly. The labeling of therefore, all our medicines is in English, including Ayurvedic medicines. Therefore, what is required This when how many people can actually read English and the fine print that accompanies? Yes, therefore, what is required is first and foremost, Government of India should declare that all languages in 7th schedule of the Constitution are the official languages of the central government. And that means they are the languages of governance. Second, they are the medium of instruction. Then third is they are the court languages. Then instant translation. Now every year you would generate at least 1 to 2 crores of jobs. Now imagine if a book published in Telugu, it has to be translated in all 20 languages. Now imagine the number of jobs that it creates. Ask Sankrant how difficult it is to get translators. But it's so much. And then automatically our language if it takes 10, 20 years of giving people skills first in their mother tongue. No, it happens automatically because all those people who are already there. 10 years all we need is political will. मधु जी क्या हो रहा है ना कि अब जो नीति भी इन्होंने बता दी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी बना दी. पूछो कितना पैसा आपने ट्रांसलेशन के लगाया है? आपने लगाया उसके लिए 10,000 करोड़ रुपए एलोकेट किया है आपने कि सारी विद्या को ट्रांसलेट करो? एलोकेशन तो आपने बजट के अंदर कुछ नहीं की. आप सो कॉल्ड रिलीजन के बेस के ऊपर डिस्क्रिमिनेटरी स्कीम्स में जितना पैसा लगाते हो उतना पैसा भी आप एजुकेशन में लगाने को तैयार नहीं हो ट्रांसलेशन के लिए. तो आपने जो सारे का जो कमिंग बैक टू वेयर वी स्टार्टेड द डिस्कशन, 6 लाख करोड़ 60,000 करोड़ नहीं, ये जो 2024 की प्रोजेक्शन है 6 लाख करोड़ रुपीज आप फॉरेन में करोगे उसके लिए. लेकिन इंडिया में आप एजुकेशन में जितना इन्वेस्ट कर रहे हो उससे कहीं ज्यादा आप इन्वेस्ट कर रहे हो लोगों को बाहर भेजने. Sankrant, say it again. You were not audible. Make the last point again. Okay, I'm just saying this point that the budgetary allocation for education and for translation has to be in line with the rhetoric. आपने रेटरिक में बोल दिया कि आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मदर टंग के अंदर इंजीनियरिंग में एजुकेशन करोगे. मुझे पता है, मैं वहाँ पे गया अटल बिहारी विश्वविद्यालय भोपाल के अंदर. वहाँ पर उन्होंने पूरी यूनिवर्सिटी का बजट 5 करोड़ रुपीस दिया हुआ है. सोचो 5 करोड़ में आज स्कूल नहीं चलता है. Or they are expected to also translate all the engineering and medical texts, and after they fail to do this, then they say कि हमने mother tongue education try की और वो fail हो गई, चली नहीं. आपको उसका जब तक आपने budgetary allocation नहीं किया और आपने 50,000 करोड़ allocate नहीं किए कि मैं पूरी की पूरी शिक्षा को बदलूंगा, उसके अंदर ये सुधार लाऊंगा, अपनी मातृभाषा में शिक्षा होगी, लेकिन पैसा उसके साथ आप पीछे लगाना पड़ेगा. पैसे के बिना ये नहीं संभव है. और सारा समाज, अगर चीन को देखो, बाकी सब समाज को देखो, सब देश अपनी भाषा के बढ़ावे में इतना ढेर सारा पैसा लगाते हैं. और हम तो क्या कह रहे हैं, अपनी मातृभाषा को अपनी माँ, जैसे मधु जी बोलती है ना कि अपने इनको एनजीओज को पैसे दे दो तो अपनी माँ को के ऊपर भी थूक देंगे, वैसे ही वो मातृभाषा का भी हमने हाल किया हुआ है. सबसे नीचे अपनी मातृभाषा को रखा हुआ है कि जो अपनी भाषा में बोलेगा, उस स्कूल में जाएगा, वो निकम्मा है, नीच है, किसी काम का नहीं है, उसको हमने वैसा ही बना दिया. और क्योंकि हमने उसके अंदर दूर की सोच नहीं की और उसमें पैसा नहीं डाला. सरकार ने भी सारी की सारी हायर एजुकेशन सरकार फंड करती है, सारी यूनिवर्सिटी सरकार फंड करती है. एनईपी में भी माइनॉरिटीज के लिए, रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए स्पेशल एलोकेशन बाय यूनिवर्सिटी उन्होंने बोला हुआ है. मदर टंग का नाम लिया हुआ है, लेकिन एलोकेशन या फंडिंग की बात बिल्कुल नहीं की हुई. तो जब तक आप पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज, जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है ना, तभी ये बदलाव आएगा. इसमें एक विषय ध्यान रखना चाहिए. Final comment and we'll wind up. एक विषय ध्यान रखना. Any learning takes place for 2 reasons. It could be both or either of the reasons. Number 1, it should be directly connected to livelihood. अगर हम जो पढ़ाई करते हैं उसको नौकरी मिलना चाहिए. Why people are after software, learning of software?
because they know that they get some kind of a job. Then the second is aspirational. Why people learn English? Because जो English जानते हैं उसका समाज में थोड़ा उसका स्थाई बढ़ जाता है. At least in the perception. So same thing has to be given to Indian languages, especially Sanskrit, that if you learn Indian language perfectly, or at least classical language or ग्रांधिक और शुद्ध भाषा में अगर आप बात करें, then आपका जो सामाजिक स्थाई बढ़ना चाहिए, that means aspiration बढ़ना चाहिए. Number 2, by learning that or learning in that language, you should be able to get livelihood or employment. Unless these two are connected, nobody would learn any knowledge. Unless one is driven by passion, that would not be even 0.00001%. Thank you. I agree with you. Not only should you get employment, नौकरी या जॉब मिलना ही काफी नहीं. You should be able to reach the highest echelons of power Yes, on the aspiration. strength of our own languages. जिस दिन वो हो गया तो उस दिन हम मानेंगे भारत. See, it doesn't require anything today. If अगर नरेंद्र मोदी जी सोचें, if he says that yes, from 1st of 2023 January, we are going to start have all Indian languages as the official languages of Indian Union, then everything will fall in place. Second, about calendar also, as Dr. C.K. Raju keeps saying. Now, one thing I remember, suppose Christmas, everyone knows that he said, it is his words, that Christmas falls on 25th December. But when does Dasara falls? When does other festivals fall? You have to make effort to know. Whereas for them, it is easy, 25th December. Whereas for us, our own calendars are available, but then we have to make effort to know. And how many Indians or how many Hindu students know exact date? Suppose today I ask anyone, we don't know. Even I myself do not know when is the next Dasra going to be, or Ram Navami going to be. So the same thing, calendar also we should get back. So there are many things, of course. Yeah. और वैसे तो उसके नाम में ही है नवमी को, रामनवमी तो नवमी को होगी, लेकिन नवमी हमको पता नहीं है. Yes, क्योंकि yes. हमारे कैलेंडर में तो स्पष्ट ही है नवमी को है रामनवमी. Everything is स्पष्ट है. But yet we have abandoned हमारा कैलेंडर ही बदल गया है. Yes, yes. So चलिए कम से कम बात तो शुरू हो गई इस पे. और मुझे लग रहा है कि मैं जो कमेंट्स देख रही हूँ हमारे व्यूअर्स के, सभी मोर और लेस इसकी सहमति में है. बहुत कम है जो कि इसके विरोध में बात कर रहे हैं हमारे व्यूअर्स. तो जाहिर है कि एक नया कंसेंसस आ रहा है. हाँ, हमारे एडमिन दिखाना चाह रहे हैं, ये एनडीटीवी ने चुन के जहरीले कमेंट्स निकलवाए और फिर चलाए. तो आप दिखा लीजिए जरा इसको बड़ा करके, क्या है ये वाला. Actually, we should ignore all that, these kind of people. ये मधु जी ये बात ठीक पे कह रहे हैं. कुछ सिलेक्टिव बायस भी हुआ है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने सराहा है सरकार को, लेकिन उन्होंने 1% जहरीले पकड़ के उन्होंने भी हाईलाइट किया. मैं सिर्फ एनडीटीवी की बात कर रही हूँ संक्रांत. उन्होंने ही जहर फैलाने का सिस्टमैटिक काम किया. बिल्कुल उनकी तो ब्लेम नहीं कर रहे हैं. हम एनडीटीवी के उदाहरण दे रहे हैं. अब ये देखिए ना, वही लड़की को दो बार 3 बार इंटरव्यू कर रहे हैं और एक के बाद एक जहरीले कमेंट्स उसके पास किए जा रहे हैं. एक लड़की तो बल्कि एक कांग्रेस वर्कर की बेटी थी, जो जिसकी मदर इज तो उन्होंने पकड़ के ढूंढा है उन लोगों को कि जो एंटी गवर्नमेंट बोलेंगे. बिल्कुल. तो ये काम जब इतना सिस्टमैटिकली, मतलब बेशर्मी से हो रहा है, जितनी भी जहरीली कमेंट्स आई हैं और मीडिया पे छाई हैं, आई थिंक 90% उसमें से एनडीटीवी का योगदान है. और ऐसे समय में आप देखिए, जब सरकार इतना अच्छा काम कर रही हो, सराहनीय हो, दुनिया उसको सराह रही है, और ये लोग, एक क्या कमेंट था, इनको अब आप जाके जरूर देखिए, ये क्या था, मैं पढ़ ही नहीं पा रही हूँ. Journalist Bernie Gore's executed in Kamal by we are working with US officials to get several more journalists of Afghanistan. I don't know. It's very difficult to take it out like this.
But let's take it that there are some select TV channels, particularly the NDTV, have gone out of their way to spread poison, even at this time of emergency for the country, in the sense that we had all these youngsters to be evacuated. They were caught, they were trapped, their lives were in danger, and the government was doing its best. But we Now, must understand that NDTV is also product of the same anti-Hindu, anti-India education system. All the people working there. So it is only a symptomatic. The problem lies with education. They have been fed. education and incentives. Yes, Also incentives. they are part of the deep state. incentives भी बहुत जरूरी है. It's education और जो Incentives. सारा systematic Exactly. See, if NGO you're well और educated, ये जो सारा का सारा everyone in the government cultivation किया हुआ system है. or anybody in India is a product of the same toxic and anti-Hindu education, be it in the army, be it in the police, be it in the media, academia, teaching, politician, every field. no, but Nageswar ji, there are shades and shades, and I Of think course, what shades are there. please Yeah, one shades second, are there. Nageswar I ji. agree. I think what is important also to understand, those who are on the payroll of foreign agencies out to destroy Rec India. And NDTV belongs to that category. It's not just the toxic education they got in the schools and colleges of India, which is also part of the problem. But NDTV is a very small part of the. There are no, bigger, but it's not. It's bigger not. issues. Bigger issues. I'm Okay. not sure that NDTV can be called small part of the problem. It leads the global narrative. It leads the global narrative. NDTV and such like people. They are the ones. Again, I would like to give example. Somewhere I read around 3-4 months ago that China has banned English in China. Learning of Yes. I don't know how far that is true I because had tweeted this. I had tweeted this, yes, Nageshwari. yes, Not learning English. What was happening is in Beijing they were conducting English exams in schools as one yes, of the exams, and they have stopped those. और इंडिया में तो हर नुक्कड़ के ऊपर आप अंग्रेजी एग्जाम करवाते हैं yes. उनसे. The reason that is advanced is that no once English is banned, the penetration of the foreign forces into the Indian society will also come down. Yes. Because it becomes very difficult for them to penetrate. Now English is the weapon, or English is the route, English is the medium, English is the vehicle through which they penetrate into our deepest parts of Indian society, Hindu society. So banning English, I don't say ban, at least no, reducing its influence and सही बात है. increasing our Indian कन्वर्जन language is very. क्रिश्चियनिटी की कन्वर्जन तो जरूर कम होगी, क्योंकि क्रिश्चियनिटी की तरफ कन्वर्जन का जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन है कि हम अंग्रेज बन जाएंगे, हमें गिटर पिटर अंग्रेजी आ जाएगी. पंजाब तो वही हो रहा है ना, पंजाब तो वही हो रहा है. Okay, now I think it's time to wind up. Thank you both of you for very insightful comments and analysis. Viewers, thank you for staying with us all this while, and I look forward to your feedback. I've been watching your comments, reading them, but we could take on the screen only those that are part of super chat. नहीं तो सबको लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है. तो आप फीडबैक अगर पर्सनल मुझे भेजना चाहते हैं तो ये मेरी ईमेल editor@manushi-india.org, जो अभी स्क्रीन पे आएगी. बट प्लीज डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू मानुषी चैनल. सी यू टुमारो. कल तो इंटरनेशनल विमेंस डे है, तो वो जो तमाशा होता है उसके ऊपर कुछ मजेदार चर्चा करेंगे. जरूर जुड़िए कल हमारे साथ 8 बजे. नमस्ते, जय हिंद, शुभ रात्रि.